ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिध्यवरुध्यते कीर्तिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरौ रसिका भुवि भावुकः। पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरौ रसिका भुवि भावुकः। नैमिषनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममाशत। तैकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। ऋषयौचुः त्वया खलु पुराणानि स्येतिहासानि चानघ आखात्तान्यपि धर्मशास्त्राणि यान्युत। यानि वेदवेदां सृष्टो भगवान् वादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः। वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्तो तस्य तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युतः। तत्र तत्राञ्जसा युष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्न संशितुमर्हसि। प्रायेणाल्पायुषः सभ्यकलावस्मिन् युगे जनः मन्दाहासु मन्दमतयो मन्दभाग्ययुपद्रुतः। भूरीणि भूरि क्रमाणि स्वर्तव्यानि विवागश अतः साधोत्रयत्सारं समुद्ध्रेते मनीषया। ब्रूयिणः श्रद्धानानां येनात्मसंप्रसीदते सुतजानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः। देवक्यां वसुदेवस्य जातुयस्य चिकीर्षया तन्न शुश्रूषमाणानामर्हंस्यङ्गानुवर्णितं। यस्यावतारभूतानां क्षमायै च भवाय च आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्य विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयं। यत्पादसंश्रयः सूत मुनये प्रशमायेन सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टः स्वर्धुन्यापो अनुसेवया। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकण्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद्देशः कलिमलापहं। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूयिणः श्रद्धानानां लीलया ददतः कला। अथाख्याय हरेर्धीमन् अवतारकथा शुभा लीला विदधतः स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया। वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। कीर्तवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढकपटमानुषः। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षिणा हरे। त्वं नः सन्दर्शितो धात्रा
दुस्तरं निस्थितिर्शतां कलिं सत्वहरं पुंसां कर्णधारैवार्णवं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मबर्मणे स्वं काष्ठामदनुपेते धर्मकं शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मबर्मणे स्वं काष्ठामदनुपेते धर्मकं शरणं गतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे दुब्बल दिन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओम वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओम वासुदेवं भज भज वासुदेवं 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 भज वासुदेवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोनत्रिंशोऽध्यायः। देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकम् यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरश प्रभो। विरागो येन पुरुषो भगवान् सर्वतो भवेत् आचक्षु जीवलोकस्य विविधा मम संसृते कालेस्य सुररूपस्य परेषां च परस्यते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्येतुः कुशलं जना लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुषश्चेरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रय श्रान्तस्य कर्मसु विद्यया धिया त्वमाविरासि किल योगभास्करः। मैत्रेय उवाच इति मातुर्वचःश्लेषणं प्रतिनन्द्य महामुनिः आवभाष्य कुरु श्रेष्ठ
प्रीतस्तां करुणार्दितः। श्रीभगवानुवाच भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विविद्यते। अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा सम्रं विभिन्नदृग्भावं महि कुर्यात् सतामसः। विषयान् विसन्धाय येष ईश्वरमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथग्भावस्य राजसः। कर्मनिर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् ये जेद्यष्टव्यमिति वा पृथग्भावः सात्विकः। मद्गुणस्फूर्तिमात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गा वसवम्बुधौ। लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे। सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत स एव भक्तियोगाख्यः आत्यन्तिक उदारितः। येनातिम्रजतिर्गुणं मद्भावायोपपद्यते निसेवितिना निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन सस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यशः। मधिशृण्य दर्शनस्पर्श पूजास्तुत्यभिवन्दने भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च। महतां बहुमानेन दीनानामनुकम्पया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु येमेन नियमेन च। आध्यात्मिकानुश्रवणान् नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवेनार्यसङ्गेन निरहङ्क्रियते तथा। आर्जयेन्नार्यसङ्गेन निरहङ्क्रियते तथा। मधर्मणो गुणैरतैः परिसंशुद्धाशय पुरुषस्याञ्जवासाभ्येति श्रुतमात्रगुणं हिमां यथा वातरथो घ्राणाम् अङ्ब्रीते गन्धाशयात् एवं युगरतं चेत आत्मानम् अविकारितेत्। अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तममज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चाविडम्बनम्। यो मां सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तममज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चाविडम्बनम्। यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरं हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्नेव जुहोति सः। द्विशतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिन भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छते। अहमुच्चावचैर्द्रव्यैः क्रिययोत्पन्नया नगे नैव तुष्यर्चितुर्चायां भूतग्रामभवानिनः। अर्चादावर्चयेत्तावत् ईश्वरं मां स्वकर्म कृत् यावन्न वेदसूरिदे सर्वभूतेषु वस्थितम्। आत्मानश्च परस्यापि ये करोत्यन्तरोदरम् तस्य भिन्नदृशो मृत्युर्विधते भयमुल्बणम्।
अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेद्दानमानाभ्यां मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा जीवा श्रेष्ठा हे जीवानां तत्प्राणभृतशुभे सच्चित्तः प्रवरास्ततश्चन्द्रियवृत्तयः तत्रापि स्पर्शवेदीभ्यः प्रवरारसवेदिनः तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्ततशब्दविदो वरः रूपभेदविदस्तत्र ततश्चोभयेतु दत्त तेषां बहुपदा श्रेष्ठाश्चतुष्पादस्ततो द्विपाद ततो वर्णाश्च चत्वारस् तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेषोऽपि वेदज्ञो याथज्ञो विदिकस्ततः अर्थज्ञात संशयेच्छेता ततश्रेयान् स्वकर्म कृत् मुक्तसङ्गस्ततो भूया न दोग्धा धर्मात्मनः तस्मान्मयर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः मयर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्निष्टकर्मणः न पश्यामि परं भूतं कर्तुमसमदर्शनात् मनसैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानये ईश्वरोजीव्यकलया प्रविष्टो भगवानिति भक्तियोगश्च मया मानव्युदीरितः येयोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् एतद्भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितं रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयं योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः स विष्णुवाख्यो अदियज्ञोऽसौ कालकलयतां प्रभो न चास्य कश्चिदयितो न द्वेष्यो न च बान्धव आभिसत्य परमत्तोऽसौ प्रमत्तं जन्मन्तकृत आभिसत्य परमत्तोऽसौ प्रमत्तं जन्मन्तकृत यद्भयाद् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयाद् वर्षते देवो भगणो भाति यद्भयाद् यद्वनस्पतयो भीता लताश्चौषधिवेशः स्वे स्वे काले गृह्णन्ते पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पद्युतधीर्यत अग्निरिन्द्रसागिरिभिर्भूर्नमज्जति यद्भयात् नभो ददाति स्वसतां पदं यन्नियमाददः लोकं सोऽदेहं तनुते महान् सप्तविरावृतं गुणाभिमानिनो देवः सर्गादिस्वसेद्भयात् वर्तन्त्यनुयोगं येषां वसयेत्तच्चराचरम् सुनन्तु अन्तकरः कालो नादिरादिकीर्तव्यः जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम् सुनन्तु अन्तकरः कालो नादिरादिकीर्तव्यः जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने 39 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवं भज
वासुदेवं भज वासुदेवं भज ॐ वासुदेवं भज वासुदेवं भज ॐ वासुदेवं भज वासुदेवं भज ॐ वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण को श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ को आज को आनंद को लक्ष्मीनारायण भगवान को राधा सर्वेश्वर भगवान को। अथ त्रिंशः कपिल उवाच तस्यैतस्य जनो नूनं नायं विदुरुविक्रमं काले मानोऽपि बलिनो वायोरेव घनावलिः यं यं मरतमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं तं धुनोति भगवान् पुमांसो सति यत्कृते ये दुर्वश्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मति दुर्वाणि मन्यते मोहाद्गिर्यक्षेत्रपशूनि च जन्तुर्वै भवेत् तस्मिन् यां यां योनिमनुवर्जेत् तस्यां तस्यां शलभते निवृत्तिं न विरज्यते नरकस्थोऽपि देहं वै न पुमास्त्यक्तुम् इच्छते नरक्यं निर्वृतौ सत्यं देवमाया विमोहितः आत्मदया सुतागार पशुधर्मिणबन्धुषु निरूढमूलहृदय आत्मानं बहु मन्यते सन्दयमान सर्वाङ्ग यसा मुद्वहनादिना करोति विरतं मूढो दुरितानि दुराशयः आक्षिप्तात्मेन्द्रिय स्त्रीणां सतीनां च मायया रहो रचितया लापैः शिशूनां कलवासिनां गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेषु तन्द्रितः कुर्वन् दुःख प्रतिकारं सुखवन् मन्यते गृहे अर्थैरापादितैर्गुर्व्या हिंसयेतस्ततस्तथा नपुंसा पुष्पाति यसां पोषेणस्य स भोग्यात्यधः स्वयं वार्तायां लोप्य मानायामारब्धायां पुनः पुनः लोभाभिभूतो निसत्तोः प्रार्थिकृते स्पृहाम् कौटुम्बभरणाकल्पो मन्दभाग्यो पितुद्यमः श्रियाभिः कृपणो ध्यायञ्च व्यसते मूढदे एवं सुभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं किनाशैव गोचरम् तत्रापि जातनिर्भेदो विरेमाण स्वयं मृते जरयोपातवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे आष्टेव मत्युपन्निस्तं गृहपालैवाहरन् आमयाव्यपदीप्ताग्निरल्पहारोऽल्पचेष्टितः वायुनोतकर्मतोत्तारः कपसमृद्धनाडिगः काशश्वासकृतायासः कण्ठे घूरघुरायते शयानपरिशोचद्वि परिवीतस्वबन्धुवे वाच्यमानोऽपि न मृतिः कालपाशवशं गतः एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः म्रियते रुदतां स्वानाम् उर्वेदनयास्तदेः हेमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सर्वसेक्षणौ स दृष्ट्वा स्रस्तहृदय सकृन्मूत्रं विमुञ्चते यातनातिहावृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानं दण्डिं राजभटा यथा तयोर्निर्भिन्न हृदयैस्तर्जनैर्जातवे पथो पतिशोभिर्वक्ष्यमाणा आर्तोगं सुमनुस्मरन् श्रीच्छूत्रीटपरितोर्कदवानलानिलैः सन्तप्य महानपथि तप्तवालुके कृष्णेन पृष्ठे कषया च ताडितश्चलत्यशक्तोऽपि निरासर्मोदके तत्र तत्र पतन् श्रान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः पथापाप्यसा नीतस्तमसा यमसादनम् योजनानां सहस्राणि नवतिं नवचाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वानिथ प्राप्नोति यातना आदिपनं स्वगात्राणां व्यष्टवीत्योल्मुखादिभिः आत्मां साधनं क्वापि सुकृतं परतोऽपि वा जीवतश्चान्त्राभ्युदारः सुगृध्रैर्यमसाधने सर्पवृश्चिकदंशाद्यैर्दशद्भिः चात्मवैषमम् सर्पवृश्चिकदंशाद्यैर्दशद्भिः चात्मवैषमम्
कीर्तनं चावयेव सो गदा दिव्यविदापनं पातनं गिरिशृङ्गेभ्यो रोदनं चम्बुगर्तयो यस्तामिश्रान्दता मिश्रा रौरवाद्याश्च यातनः भुङ्क्ते नर वा नारी वा मिथसङ्गेन निर्मिता अत्रैव नरकः स्वर्ग इति महात् प्रत्यक्षते या यातना वै नारक्यस्था यहाप्युपलक्षितः एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरं वरे भवा विसृज्योभयं प्रेत्य भुङ्क्ते तत्फलमदृशम् एक प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं शोकलेवरं कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतं दैवेन साधितं तस्य समलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य ऋतवितैवातुरः केवलेन ह्यधर्मेण कुटुम्बवर्णोत्सुकः याति जीवोन्दतामिश्रं चरमं तमशवदम् अधस्तान्नरलोकस्य यावतिर्यातनादयः कर्मस समनुक्रम्य पुनरत्र वर्जेत्सुचिः अधस्तान्नरलोकस्य यावतिर्यातनादयः कर्मश कर्मनु समनुक्रम्य पुनरत्र वर्जेत्सुचिः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे कापिलियोपाख्याने कर्म विपाको नाम 3 धूपबत्ती गर्दै जलाइदिनु। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ॐ वासुदेवं भज। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ॐ वासुदेवं भज। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ॐ वासुदेवं भज। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ॐ वासुदेवं भज। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ॐ वासुदेवं भज। भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान को, राधा सर्वेश्वर भगवान को, लक्ष्मीनारायण भगवान को, सम्पूर्ण कर्ता जनहरूको
हाम्रो श्रद्धेय कर्ताज्यूहरू श्री ताराबहादुर सुदन अधिकारी एवं श्रीमती देवी पार्वती अधिकारीज्यू तथा सुपुत्रीहरू सुश्री स्वस्तिका अधिकारी, सुश्री सुमीक्षा अधिकारी एवं सुपुत्र श्री सम्राट अधिकारी सहित सम्पूर्ण अधिकारी परिवारद्वारा आयोजित यो दिव्यतम भव्यतम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा हाम्रो आज द्वितीय दिवसमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सज्जन वृन्दहरूमा भक्त सज्जन वृन्दमा म व्यासाचार्यको तर्फबाट भगवत भक्ति प्राप्ति होस् भनेर कामना गर्दै हाम्रो द्वितीय दिवसको पाठ पारायण कर्मको आरतीको निमित्त सबै कर्ताज्यूहरूलाई तयार भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस समाजमा रहनुभएका सम्पूर्ण समाजसेवी गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूको आगमन भइराखेको छ। सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अब आरतीको निमित्त सम्पूर्ण कर्ताजनहरूलाई धूप र दीप बालेर उठेर यथास्थानबाट उठेर र सम्पूर्ण आगन्तुक सम्पूर्ण महानुभावहरू पनि यथास्थानबाट उठेर जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट भगवानको आरतीमा सहभागी भइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। जय श्री राधे।